आज का पूरा टॉपिक है नेगेटिविटी दूर भगाना। द वुमन इज द लक्ष्मी ऑफ द हाउस। जो घर का करता है उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। डोंट हैव मोर देन वन गणपति इन द हाउस। Okay. Don't have more than one god or whatever you're doing. Don't flit from god to god to god to god. North is the color of water, which is navy blue or black, even white. East is green and brown and yellow. This year, take a red cloth, small red cloth. They're called three Gupt Dans. Means you don't tell anybody. You quietly go, leave it at the mandir and come away. 4 means to die. 4 का मतलब death नहीं, only person. Death of money, death of relationships, death of name, fame, death of health, कुछ भी हो सकता है. तो too many 4s मत लीजिए. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। क्या त्योहारों में हमें सिर्फ पूजा ही करनी चाहिए या कुछ और भी? क्या इंसान की बर्थ डेट में उसका सारा भविष्य छुपा होता है? क्या हमारे कपड़ों का रंग ये डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा? ऐसे कई और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं द रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट कम मैनिफेस्टेशन कोच कम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम और एनएलपी ट्रेनर कम सभी की माँ जैसी, जिसे हम सब प्यार से बाप भी कहते हैं। प्लीज वेलकम ज़ेनोबिया खोडाई जी। वेलकम टू सक्सेस फंडेवा। Thank you so much. तो सबसे पहला सवाल, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ऐसे में हमें अपने घर में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. आई एम Zenobia and I double the turnover of multinationals, celebrities worldwide. और एक घर इज आवर एक्सटेंशन. अगर आप पारसी घर में जाओ तो आपको पारसी फर्नीचर मिलेगा. साउथ इंडियन देन यू विल गेट साउथ इंडियन. लाइकवाइज घर आपका एक्सटेंशन है. अगर घर कचरे वाला, क्लटर्ड, जिसमें टूटी हुई कांच, टूटे हुए बर्तन, लिपस्टिक्स, थिंग्स दे आर नॉट यूज्ड, पेन्स दैट डोंट वर्क, अगर ये सब कचरा आप इकट्ठा करते तो पॉजिटिविटी आ नहीं सकती है. तो अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, पहले तो जैसे हम दिवाली में करते, सब अपनी गंदी चीज़ें निकाल दीजिए. जो टूटी हुई है, एक नई साड़ी जो आपने 10 साल पहनी नहीं है, दैट इज ऑल्सो क्लटर. जो चीज़ आप नहीं यूज़ करते हो उसे हम डेड बोलते हैं, स्टक एनर्जी. ये तो मेरे ख्याल से हमारे महात्मा गांधी जी भी ये कह के गए कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. एब्सोल्युटली. और न्यूमरोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी हर एक का डेट ऑफ बर्थ है. तो विच एवर इज योर डेट ऑफ बर्थ, अगर नंबर 1 है, नंबर 1 का मतलब विनर, पावरफुल, और नंबर 1 का कलर नेवी ब्लू एंड ब्लैक. और नंबर 1 बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, हमेशा ऊपर रहना चाहते. एक शर्ट बाय करेंगे अगर इनके पास 1000 है, दूसरे लोग जैसे 2 या 3 नहीं लेंगे. दैट इज नंबर 1. ओवर इमोशनल, कुछ अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं तो नहीं. नो मिडिल पाथ. वो दिमाग कम यूज करते, दिल ज्यादा. नंबर 2 को हम बोलते वेरी लविंग, वेरी सिंसियर. अगर आप हस्बैंड हो और नंबर 2 है तो यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड. बिकॉज नंबर 2 आर पीपल हु आर फैमिली ओरिएंटेड. फैमिली के अलावा इनको और कुछ, ये कभी ऊपर नहीं जाएंगे इतना जितना नंबर 1 और नंबर 3 और 4. बट द वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, वेरी 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 गुड. और 2 का कलर है येलो, अर्थ का करता. जैसे 1 वाटर एनर्जी है, 2 अर्थ एनर्जी है, धरती का कलर विच इज येलो, क्रीम, बेज, ऑफ वाइट, रेड, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, मूव. नंबर 3 ट्री एनर्जी, ग्रीन कलर. और नंबर 3 किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने आप चलते, अपना काम करते. इन चाइल्डहुड दे विल नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स. वो अपनी ज़िंदगी अपने रूल्स पे जीते हैं. नंबर 3 वेरी गुड, वेरी पावरफुल, लिटिल शो ऑफ्स, लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस दे वांट. नंबर 4 जो राहु का नंबर है, वेरी स्ट्रांग. वो तो बस अपना मन मौज है. मीन्स अच्छा लगे वही करेंगे, अपनी ज़िंदगी खुल के जीते हैं, रिस्क लेते हैं. एंड दीज पीपल एक्चुअली ग्रो, भले उनका एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है. दिस इज़ योर नंबर 4. जो भी नंबर 4 है, ये साल 2025 या तो आप डाउन गए या तो आप अप गए. मिडिल पाथ बहुत कम है. ओके. सो अभी भी फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट. दिवाली आ रही है तो मेक श्योर दैट यू यूज इट टू द फुलेस्ट. और
ये नंबर 9 तक पूरा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी ये साल में क्या करना है। वाओ। नंबर 5 लोग घूमते रहते मल्टीटास्किंग, एक जगह नहीं बैठते। ये भी करते हैं, एक लेडीज है वो खाना भी पकाएगी, फोन पे भी बात करेगी, इंस्ट्रक्शन भी देगी, एट द सेम टाइम अपनी साड़ी भी पहनेगी while cooking. So if it's a boy or a girl, number 5 means constantly on the move. Always सब कुछ करना है, ये भी करना है, घर भी चलाना है, बाहर भी करना है. That's number 5. The colors are earth colors, yellow, red, pink, purple, orange, mauve. ये धरती के लोग हैं. Number 2 and number 5. Number 6 are pure good souls. 3 and 4 झाड़ एनर्जी, ट्री एनर्जी है. 5 अर्थ एनर्जी. 6 जो है वो मेटल एनर्जी है. अगर आप नंबर 6 है तो आपको मेटल की घड़ी पहननी चाहिए, ओके। लेदर नहीं. आपको मेटल स्टैच्यूज रखने हैं. एंड मेटल पीपल आर वेरी स्ट्रांग, वेरी रिजिड, जल्दी मुड़ नहीं जाएंगे. एंड इफ यू हैव अ वाइफ हु इज नंबर 6, देन शी इज द मनी इन योर लाइफ ओके। फॉर नंबर 6. 7 अपने अपने चेक करो पार्टनर्स को क्या हो रहा है, और प्लीज़ इनको ईमेल करके बताइए कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है. नंबर 7 is also metal energy, but they are very spiritual, they're kind, they're like rainbows covering, would like meditation, would like to be calm, ओके। sincere. They do make marriage, very good marriage partners, and also that they are very, very good at heart. नंबर 8 वापस अर्थ एनर्जी है, जैसे 2 और 5 थी धरती के लोग. अभी धरती मीन्स जो 8 है उनको पहाड़ अब बोलते हैं. ओके। ओके. जो 5 थे घूमते रहते थे, 2 बहुत प्यार करने वाले अर्थ. पर माउंटेन एनर्जी जिद्दी अकड़ू इज नंबर 8. ओके। ओके. इन्फिनिटी, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे जब तक वो खुद नहीं रियलाइज करो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. दैट इज नंबर 8. स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव. ये साल वेरी गुड इवन फॉर नंबर 8. नंबर 9 को हम अग्नि तत्व कहते हैं, Okay. विच इज फायर एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फायर. दैट मीन्स उनका गुस्सा भी सोडा वाटर बॉटल जैसा है. ठक एंड दिल. तो अगर आपका हस्बैंड 9 है, जब वो गुस्सा करते 2 मिनट गो आउट, या एक पानी का ग्लास दे दो. ओके। So that is the colors, and the colors of fire are red, pink, purple, orange, mauve and light blue. जब आप दिया जलाते हो, आखिरी फ्रेम सबसे strong light blue होती है. ओके। So that is what we do. This is the understanding of numerology and 9 numbers. Correct. तो अगर आप एक घोड़ा रखते हो, हॉर्स, सब मुझे पूछते हैं कितने घोड़े रखे, 1 या 3 या 4 या 7. So if you are putting a horse, your number 1 you will put. 1 horse. If you're number 9, you will put. 9 horses. Yes. So use that number. आप coins भी रखते हो in a little treasure pot. Put the number and make your number ओके। stronger. You get me? ओके। सो एक जो बेसिक सवाल है वो मेरे ख्याल हमारे सारे व्यूअर्स के माइंड में भी चल रहा होगा कि हाउ डू यू डिटरमाइन दीज नंबर्स? इज इट ओनली डेट ऑफ बर्थ? Oh, there is lots. There's numerology. There are 12, 15 types of numerologies. But your basic Mulank, your number that you're born in is that, and you can add all your numbers, and the final number you make into a single digit. And if you want to learn numerology, it will take you years and years and years and years. Open books, try and read yourselves. Try and get your best foot forward and see if the subject excites you, you will enjoy it. Wow, listening to your views, it gives me a great pleasure to know that आपको 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स की एक एक कैरेक्टरिस्टिक इतने बारीकी से पता है, Small. याद है. आई एम श्योर आपने काफ़ी इसके पीछे काफ़ी आपने मेहनत की है, पढ़ा है इसके बारे में, ट्रेनिंग ली है. पर ये न्यूमरोलॉजी का सफ़र एक्चुअली शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ आपका ये बहुत फनी रीत से शुरू हुआ कि अबाउट 35-38 years ago मेरे हस्बैंड पूना में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे. तो एक दिन वो भाग के आए कि देखो मेरे को इतना सस्ता ये एक छोटा फ्लैट मिल गया, 1 bedroom. मैंने तो ले लिया. लेने के बाद 1 महीने के लिए डाउन डाउन डाउन. मेरा मिलियंस को कुछ नहीं हुआ, बट एवरीथिंग दैट वाज ऑन हिज नेम वेंट डाउन डाउन डाउन. ओह, कब मेरे गुरु आए थे मेरे जिंदगी में, ओके जो फिर 40 साल मेरे गुरु रहे.
ओके और उन्होंने 2-3 सिंपल चीज बताई। और पहली मैं हर एक जना को बोलती हूँ जो एक नया घर लेते हैं ओके कि डोंट बाय अ हाउस ऑपोजिट एक चर्च, ग्रेवयार्ड, लॉन्ड्री, हॉस्पिटल, अबॉर्शन क्लिनिक और मंदिर भी नहीं। डोंट बाय अ हाउस देयर, बिकॉज मंदिर एनर्जी बहुत प्योर है। अब मंदिर में कौन आता है? जब आप बहुत खुश होते हो, नहीं जाके बोलते हो भगवान मेरा बहुत अच्छा हो गया, आज नई गाड़ी मिली। जब नई गाड़ी मिली डर के कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो, तब आप। भगवान के पास जाते हैं, करेक्ट है। इसलिए जो भी दिक्कत है दे कम इन एंड लीव इट बिहाइंड। मंदिर आने के बाद इनको बहुत अच्छा लगता है, बट वेयर डज दैट नेगेटिव एनर्जी गो? मंदिर बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, दिया है, बेल्स है, चांटिंग है, तो वो बाहर जाती है अराउंड द मंदिर, द नेगेटिव एनर्जी। तो आपका घर इफ इट्स ऑपोजिट अ मंदिर, you've had your chips. If you have an open door or open window, for some time keep it closed. That always brings me to the obvious question that what should we take precautions अगर हम नया घर या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो? Wonderful. See, same way what I said, don't buy across a church, graveyard, a laundry, abortion clinic, hospital, and in your house. 4-5 सिंपल टिप्स नेगेटिविटी। आज का पूरा टॉपिक है नेगेटिविटी दूर भगाना। दूर भगाना, तो ही पॉजिटिव आते हैं। आप मरने के बाद ही जिंदा हो सकते हो। टू ड्रिंक वाटर यू हैव टू गो टू द बाथरूम। सो दैट वे इफ यू हैव टू बी पॉजिटिव मीन्स नेगेटिविटी को हटाना है। तो पहले आप बीम्स और कॉलम्स के नीचे मत बैठिए। जो घर का करता है उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स कम हो ना हो बेटर है। अगर कुछ भी है और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो टॉयलेट का दरवाज़ा बंद और सीट बंद। कीप इट क्लीन, गुड स्मेलिंग, और टॉयलेट के बाहर एक उम्बर लगा दीजिए। दीज आर द सिंपल थिंग्स जो कुछ कर नहीं सकते। और बेडरूम में स्पेशली आपको अगर बेटे की शादी करनी है तो नो सिंगल ऑब्जेक्ट्स एंड नो 3 ऑब्जेक्ट्स। बेडरूम इज अ प्लेस आप रिलैक्स करते हो, तो बेडरूम को पिंक, पर्पल, ऑरेंज मूव मत कीजिए, बिकॉज इट्स द टाइम यू रिलैक्स टू रिक्यूपरेट फॉर द नेक्स्ट डे। किचन को साउथ या साउथ ईस्ट में होना चाहिए। और जो फ्रिज है, फ्रिज और माइक्रोवेव माउथ टू माउथ नहीं होने चाहिए। ओके या फ्रिज और हीटर, इफ यू हैव योर स्टोव, हॉट और कोल्ड सामने नहीं। ओके तो आपका माइक्रोवेव भी हो और पानी वहाँ हो, द नल का। डोंट डू इट माउथ टू माउथ, शिफ्ट इट लिटिल। बस ये थोड़ी चीज़ें इफ यू फॉलो, इट्स वंडरफुल एंड नेगेटिविटी goes away. It's a slight hint into thing. And definitely I'd love you to make a relationship corner to remove negativity. आप एक वेडिंग पिक्चर लीजिए हंसता हुआ खुशी का। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैरिड कपल, हैप्पी स्माइलिंग कपल का फोटोग्राफ टू एक वाज रखना है जिसमें 2 फूल हस्बैंड को वाइफ को देंगे। ओके ओके, क्योंकि आपकी वाइफ आपके घर की लक्ष्मी है। द वुमन इज द लक्ष्मी ऑफ द हाउस। एंड वहाँ 2 कैंडल्स, एक्सेप्ट फॉर फॉर्क एंड स्पून, सब कुछ पेयर्स में। nowadays so women are bosses of the house. Whatever, but you keep the woman happy और बहुत बरकत होती है। और मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताती हूँ। मेरे गुरु के टाइम में जब मैं शुरू सीखना किया, मैंने 2-3 साल में सोचा, एंड वन ऑफ द ओनली कंसल्टेंट फ्यू, तो मैंने बोला हर एक केस मुझे तो सॉल्व करना ही है। सब बहुत अच्छी रीत से चल रहा, मेरे गुरु इतने अच्छे थे। फिर एक केस आया जो मैंने 2 साल लगातार कोशिश किया, ओके, सब कुछ करके, हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एवरीथिंग आई ट्राइड। पर वो आदमी बैंकरप्ट हुआ था। जो आदमी एक बार अपनी मेड को क्लब क्लास में ले जाता था, अब वो एक प्लास्टिक बाल्टी चेंज करने को सोच में आ गया था। Okay. इट वॉज दैट बैड। तो मैं सोचा कि मेरे गुरु को इनफ नहीं आता है, शायद मुझे दूसरे टीचर से सीखना। तो मैं 2 साल सीखती रही। आखिर में मैं गुरु के पास गई, सॉरी बोला। मैं बोला नहीं, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा है। तब इन्होंने बोला आओ बेटा बैठो, अभी अब जाके वो आदमी को पूछो कि कौन सी औरत की हाय इनको लगी है, हु हैज कर्स्ड हिम। ओके कौन सी औरत को इसने सचमुच बुरा किया है।
तो मैं गई, तब वो रोने लगा, बोला हाँ मैंने ये किया और अब तो वो गुजर गई, अब मैं क्या करूं। तो मैं बहुत नाराज होके गुरु के पास गई, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने नहीं बोला हो सकता है, और मुझे 3 चीज़ देने को बताई। एक तो वो अब जो उसके ज़िंदगी में है, वो लेडी को खुश रखो, उसकी वाइफ को अच्छी रीत से रखो। दूसरा, जो वो पहले नहीं करता था, दूसरा इन्होंने बोला माफ़ी मांगो। So there was a whole process which he told me. And the moment this person, these two, and one more thing, again his luck, after doing it for 21 days, it Went at all. zoomed up completely. And that is the time I've learned that woman of the house is your Lakshmi. Bring her 2 flowers once a week. Buy her jewelry, buy her clothes, keep her happy. और मेन थिंग इज अपना वक्त दो, दोनों वाइफ को और बच्चों को। उनको आजकल क्या है कि मुझे टाइम नहीं है, बेटे को नया मोबाइल दे दिया, प्ले स्टेशन दे दिया, बस अब मुझे शांति से मैं अपना टीवी देख सकता हूँ। नो, डोंट गिव देम दीज प्रेजेंस, गिव देम योर प्रेजेंस। आपकी बीवी को आपका वक्त चाहिए। कितने भी आप डायमंड्स देंगे और इवेंचुअली खुश नहीं होगी। तो आप कोशिश करो कि बच्चों को, फैमिली को, अपने दोस्तों को, जिसको आपने वक्त दिया है, वो घर का मैंने देखा है कभी नहीं टूटते। फैमिली जो एक बार साथ में खाना खाते, वो नमक खाते, डेफिनेटली a family that prays and eats together stays together. I think this is one of the key takeaways from today's discussion, that your family doesn't need your presence, they need your presence. This is the key underline. And for any relationship, if it's a guru chela relationship, husband wife, mother child, siblings, those that stand by each other and वक्त देते हैं, मज़ा आता है। और आपके बच्चों, if you never want your children to go wrong, to all the mothers who are listening, please, it really works. Teach them one musical instrument and one sport. अगर ये 2 चीज़ आपने दिया, एक गेम और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग या डांसिंग, तो आपके बच्चे कभी ड्रग्स नहीं लेंगे। दे विल हैव टेकन देयर एक्सेसिव एनर्जी out. It's very important. I have overheard rather you speaking to someone about the significance of nakli flowers, fake flowers, Yes. not keeping it Today down. when I came, I just saw this bunch of nakli flowers here. Okay. That's when I told you. See, the rule is that flowers are supposed to bloom and die. If you put plastic flowers, then my guru used to say blooming is over. The house doesn't need growth. So if you have it in the south, your fame is over. If you have it in the north of your office or house, clients won't come. If you have it to the southwest, relationships will be bad. If in the north, then opportunities won't be there. But just to clarify, if somebody is having it for a kind of a temporary Ganpati kind of a decoration, then See, anything a little bit is fine. Too much of water is floods. But try not to overdo plastic flowers, paper flowers, cloth flowers. did you ever feel in your journey of being a numerologist that, oh, it's not working out anymore, I need to do or pursue rather something else, that made you No, pick up actually, this I skills? love this learning because the learning of the occult is so beautiful. But definitely, I learned that in numerology, don't have more than one Ganpati in the house. Okay. Don't have more than one god of whatever you're doing. Don't flit from God to God to God to God. But if different gods come into your life, it's no problem. It's like first you were in first standard, then second, then first, third, then fourth, fifth. And the mandir should not be above or below a toilet. Be very careful. They should not touch a toilet door. They should not be moving. Your deities Okay. or the mandir should not be Moving. and not too many khandit murtis, and no murtis more than 18 inches. Acha. This is the rule of positivity and numbers, that don't keep 3 of the same this, and burn the number 3 means stopper of evil. So the main thing we say Har Har Mahadev, Om Namah Shivaya. 3 means stopper of evil. So light 3 agarbattis, 3 diyas, and if you can't light 3, at least 1 in and 1 outside your door. Okay, that's really awesome to know. So all these things that you just said are related
to somehow Vastu. So how can you Everything. differentiate Yeah, how to differentiate? numerology versus Vastu, or maybe other Feng science Shui. like Feng Shui हो गया या इस तरह की और चीज़ें हो गई, astrology होगी for that matter. Okay. How is numerology different from all these See, sciences? all these are mediums to improve your life and make it better. Vastu Feng Shui are study of your house, your land, your doors, your windows, and what colors you put on your wall, and how you make the home a better place to live in. Numbers even are used in Vastu and in numerology. Tarot cards is an esoteric science where you are given messages. But important thing of colors play a great bath in both Feng Shui and Vastu. And good colors, the south is a fire energy, so red, pink, purple, orange, mauve, and light blue. If you have a north wall, you're painting, these are all walls. So when you go home and you're doing your home and your architect's doing, please tell them, I know what colors to put. Why are you putting a wrong color? And then you can get back to him and tell him, write to him in this thing, this is what is working for us. Any questions you want to ask me, please get back to him. Sure. North is the color of water, which is navy blue or black, even white. East is green and brown, okay, and yellow. And southwest is yellow, cream, beige, off white, red, purple, orange. And northeast is the prayer energy, the mandir energy. So light yellow, cream is very, very good. So these are all the colors. And northwest can be white. It's a metal color. West is white and yellow. So use these colors positively and you will find the difference. 2025 अभी खत्म होने को है और 2026 अभी आने वाला है, तो is there any special tip for these 2 years? One tip definitely I would give, this is the year of Hanumanji and it's Rahu ruled by Mangal. So especially all the number 4s, put your ears up and pay attention. This year, take a red cloth, small red cloth, 2 of them. They're called 3 Gupt Dans. Means you don't tell anybody. You quietly go, leave it at the mandir and come away. The first is 2 red cloths, 1 to Hanumanji, 1 to Mataji. I do it every month. In a year, this year as well as January of next year, at least do it once. Take the red cloth, thank Mata, because we are living on earth and Mother Earth is where you're standing. And Mumba Devi is your mother of Bombay. So make sure you visit Mumba Devi once a year and go and leave 2 Mata in a mandir, Mata and Hanumanji, red cloth, and walk away. And don't look back. Just completely walk away. Don't talk to a neighbor, anything, till you leave the Premises. temple. That is one Gupta. Gupt means quiet dan, which nobody needs to know or see. Second is a matchbox. Take a matchbox and quietly leave it at Hanumanji. This is the year of Hanumanji. So start your day and end your day with Hanuman Chalisa. It's very powerful. Keep fitkari at your door. Okay. And the Door as in the main door. main door, each bedroom door, wherever. And the third one is take 11 brooms and put them at Hanumanji or in the mandir, just outside the mandir, or give them to a Gurudwara. You can do all 11 or you can do one every Sunday or Monday. It is to clean. This is the year of Rahu. It's the year of cleaning. So all those who are number 4 specially and everybody, this year everybody can reach the top if your energy is right and you're vibrating correctly. So this year, keep your toilet's door shut, your toilet seat dirt, blue color, you get, washing liquid. Pour it and flush it every day. Clean the toilets yourself and don't take your mobile into the bathroom. Then watch the fun, please. I want them to write back to you down and tell you how much better their lives is. वन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कही है जो कि मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ सभी के लिए कि प्लीज़ डू नॉट टेक योर मोबाइल्स इन योर बाथरूम्स. ये आजकल का ग्रोइंग ट्रेंड मैंने भी काफ़ी देखा है और मैंने भी इस पे इम्प्लीमेंट किया है इनसे बातचीत करने के बाद ही. And you see things will get better. आप देखना, positivity will come. मेरे लिए तो ये पॉजिटिव बात हुई कि आप मेरे यहाँ पर स्टूडियोज़ में आई हमारे साथ, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए तो यही चेंज एक आया है लाइफ में. Nevertheless,
अगर मैं रात को सोने की बात करूं तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने क्यों आते हैं इंसान को? I'll tell you. One is that सपने are subconscious fears. जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर है वो सपने में निकल आती है। तो अगर आपने देखा कि मेरा बच्चा गिर रहा है लाल कपड़ा पहन के, इट मीन्स आप एक माँ है जो बहुत अंदर से डर रही है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। सो डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, अगर आपने सांप देखा है उसका मंदम कुंडलिनी, इट मीन्स अवेकनिंग। और जो भी सपने आते, डोंट वरी, वो डर को फेस कीजिए, जो भी डर आपका है, And I've फेस दैट डर। heard सांप दिखे तो अच्छा होता है। Is it शुभ or something? Nothing is bad and nothing is good. Everything is good. But yes, definitely it's Shivji's blessing. So definitely it is good. So don't worry. बुरे सपने का मतलब आप अनईजी है, आपकी अंतरात्मा अनईजी है। तो आप क्या करो, एक छोटा ब्लेड या एक छोटी सी चाकू, अगर छोटे बच्चों को भी बुरे सपने आते तो पुट इट अंडर द बेड, गदेला, दैट इज़ वेरी गुड। 3 लौंग गदेले के नीचे रखिए, हर हफ्ते चेंज कीजिए और ऐसे नॉक करना है 1 2 3 सोने के पहले। नॉक द बेड एंड स्लीप। मेरे बच्चे और हम रोज करते हैं। 3 का मतलब स्टॉपर ऑफ इविल, नंबर का न्यूमरोलॉजी। तो कितने में हम 3 बार हाथ कब करते, हम पारसीज में शिकस्ते शिकस्ते शैतान बोलते, हिंदूज में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 3 का चैंटिंग मीन्स यू आर स्टॉपिंग एनी नेगेटिविटी। So अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई सपने आए ना, क्या हम ऐसी भी नींद सो सकते हैं जिसमें बिना सपने के हमारी हर रात ऐसी गुजरे? आपने जब किसी को माफ नहीं किया हो तब आई हैव सीन अनईजीनेस आते नींद में। ओके। और आपका अगर इफ इट्स पॉसिबल, इंक्रीज योर D3 B12, ओह ओके इंक्रीज दैट ओके। and make sure that your magnesium is right. हर एक सिकनेस कम मैग्नीशियम और कम D3 B12 से होता है। तो इंडिया में तो बहुत कमी है। और मैं लोग बोलते हैं मुझे, मैंने तो ले लिया टैबलेट, पर 70% ऑफ लिक्विड गोज आउट ऑफ योर बॉडी। आपका विटामिन गया, ओनली 30% to 20% remains. तो हर एक 90% of people have low D3 B12 and they are those people most of the time who are depressed. ओके। तो अगर आप डिप्रेस्ड हो, खिड़कियाँ खोलो, लिसन टू हैप्पी म्यूजिक, गो आउट, फ्रेंड को बात करो, इंक्रीज दीज विटामिन्स और आपका अच्छा ही होगा। आपका कोई ऐसा एक पेक्युलर एक्सपीरियंस इन न्यूमरोलॉजी, वेदर इट इज गुड और बैड, व्हिच यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगेट ऑफ लेट? Yeah, I forgot to tell you earlier that my husband had bought an office across a graveyard. ओके। I told you when everything went down for him. Before my guru told me what to tell him to do. He had bought it very sasta from a person who was bankrupt. And it was opposite a graveyard. That's when my journey to this whole thing ओके। started. So be very careful. Don't buy things from people. If you have taken your mother-in-law's jewelry, soak it in salt, put it to the sun, then wear it. Better would be to sell it and make something new. आपने बताया था कि आपकी नीज भी थी जिसको She, unfortunately, a young girl, got cancer. Okay? And we were all shocked at a very young age. And I think she was 35 and young, not even married. And when I went, I took her for the first chemo. And then the person asked me, कि number दे दो ना. I don't know her number. So I looked and I was shocked to see the number 444444. नंबर 4 खराब नहीं है. Too many 4s is not good. तो अगर किसी का भी नंबर आप देख रहे हो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा 4 है और आपको दिक्कत आ रही है, एंड 4 का मतलब डेथ नहीं, ओनली पर्सन, डेथ ऑफ मनी, डेथ ऑफ रिलेशनशिप्स, डेथ ऑफ नेम फेम, डेथ ऑफ हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। तो टू मैनी 4s मत लीजिए। और बहुत अमीर लोगों को ये आदत है कि मैं 5 नंबर, सेम नंबर 3 बार बहुत अच्छा होता है। मोर देन 4 times देन यू विल हैव ट्रबल, बी केयरफुल। और गाड़ियों का नंबर में 4 तो जितना हो सके कम लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की पहली गाड़ी 5400 था जब हमारी गाड़ी थी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी जस्ट शुरू किया था।
वो गाड़ी regularly left side पे bump हो रही थी bump. So I would prefer whenever you have a chance, don't keep. It's a small tip, but believe me, all these tips will help you. If I've got all the barakat in the world using these, it will work for you. 100%. I've also heard that this also applies to bank locker numbers and bank account numbers also. Whether it's a locker number, a car number, your floor number. See, numbers travel everywhere. Your heartbeat is a number, okay? Your blood pressure is a number. You have 2 eyes, 2 nostrils, 1 lip, 2 ears, 10 fingers, okay, 1 heart. So numbers follow you in health. They follow you in your house, in your street number, lane number, locker number, checkbook number. Check in all these. Are there too many 4s? What about angel numbers? What is their relevance in our lives? These are called switchword or angel numbers. And the number for money is 808 520 741. Okay? Print it out. Place it. My son places it under his bed. He's made hundreds of copies and put them. Okay? And it's a number that brings in positivity. So keep it under your mobile, in between your mobile. Keep it under your, write it on your watch strap. You can write it in your, can I have the pen? I want to show them how to use lucky numbers. This is my wrist. You can zoom in. It is good every day to write like this. 808. I write it every morning. Can you see? 8 means infinity. A very good number to write on your left wrist. Left is the receiving. Then you make a lying down 8, which is the infinity symbol. On your Mount of Venus, apply every day a little ittar on it and write the number 24. If you do these 3 things and the number 5 here, if you do these things at least for 21 days, I promise you, please understand, you do this 21 days, and even if it's not worked for you, write back to them. Believe me, it will work. I have seen it. I've been using it 35 years. But everything that I've said today, all these cures, only will work if you're karmically right. Please don't think I'll do everything wrong in the world. Karma won't affect me, and I'm sure. Like the question he asked me earlier, that if you have a problem in astrology, can you change it? Well, you can't change destiny. But what you can do, if you use numbers, you do Vastu, Feng Shui, numerology, lead a good life, chant, be spiritual, walk the right path, then what happens? Suppose it is destined that you have to go to hospital and you've had a bumpy life for 10 years. Then what will happen is it will move smoother and lesser bumps, and you will go to the hospital, but probably to make the neighbor's daughter deliver. Oh, okay. So definitely karmic debts will come down. Do good, speak the truth, don't lie, make your word powerful. I've seen people who do that, what they think, what they do, and what they say. When it is in harmony, then you manifest just like that. And is there any tip to ward off the illness? Yes, tips for warding off illness. First of all, this is Akhanamak Karanava. It's little salt granules. It is not this powder salt, not the salt that you use in your cooking. Little granules. In India, we make achar out of this. So please place that in the 4 corners of your home. I put it in the 4 corners of my son's bed. Can you put 3 cloves? Yeah. I want to show everyone how you do it. You place 3 cloves and a small cinnamon, 3 cinnamon. 2 and 3. Now this wards off evil. I made this video years and years ago, and still, believe me, all over the world, I have over 3 million viewership time, and people are getting results with salt. Now for health and for everything, for barakat, there are 4 bowls of these, 1 in each room. Okay? Then have a salt water bath.
Do salt water pochas, katkas. And if you're really having sarisati or a real problem time, what you want is not happening, things are coming and then going away, then the best thing to do is dip your feet for 9 days in salt water. It's called a karmic release. So is it Very warm powerful. warm water or Any water. okay? Any water. That removes negativity. The second thing is the first cinnamon video I think I made on YouTube years and years and years ago. I want you to enter your house. You stand outside the house, enter, and blow 3 times. Got it? You've 3 times as you've come in. When you come in, your hall will be there. So send a positive thought. Okay, good people come to my house. Unresonating energies leave. Then go to the bedroom. Blow 3 times cinnamon powder. And pray that your relationships are good. You sleep well and you are safe and secure, shielded and protected. Got it? Then go to the kitchen, wherever the kitchen is. Blow 3 times and pray that the kitchen is cooked well, clean, healthy, and all good comes your way. That way, go to all the rooms. Do this. I do it every week, but at least do it in the first week of the month. And all negativity will slowly, slowly, slowly start leaving. One more thing for good luck is, will you take this? This is a wonderful trick. Today I'm only teaching you all what I do in my house. And if it's given barakat to me, it will give barakat to all of you. You take a cinnamon stick, wrap a note around it fully. Just take this red thread. Okay. Yeah, just wrap it 3 times. And then tie 3 knots. Very good. And now tie 3 knots. You don't need to break it. Just tie 3 knots. Okay. And then keep it in your tijori. If you have an elderly person in the house, yes. If you have an elderly person in the house, ask them to bless it, your mother, your guru, and you can keep it here. Now you can keep it in your hall. It doesn't matter now. 3 knots, right? Yeah, 3 knots. So you can keep it in your hall, you can keep it in your tijori, keep it in your office. I have it in my hall. It works wonders. Do this. Keep it in your mandir. Make 3 of flow. Bless it. Thank God for all the divine blessings that He's given you. Count your blessings. If you want barakat, there's one way. Keep a gratitude journal in numerology and write down 3 things you're grateful for every week and every single day if you can. Can you tell me 3 things you're grateful for? I'm grateful for everything that God has given me, including my family, Okay, your family is one then. then my professions, Your profession of podcast and doing so well. God bless you. And third? and third is, of course, a guest like you. Thank you. 3 lakh people die every morning. That is the statistics. So do you know that you make big plans? Tomorrow I'll do this, next year I'll do that. You don't even know whether you're going to get up tomorrow. So the fact that you have got up, first say shukrana and thank you for this body, for the vital organs, for your heart that's beeping, for every single thing. Write 3 things of gratitude every day. Your loved ones are alive. Your children are doing well. You never have to do this. God has blessed you. Please write down 3 gratitude. Suppose there's a little child and he comes running to the father and father comes home and says, I got a chocolate for you. And the child kisses him and hugs him and says, thank you. You know next week what the father is going to do? How many chocolates is he going to get? 2. 2. So God is our Father and He's doing the same thing. You show gratitude for what you have and believe me, you'll get parking where you want parking. You will get entrance where you want entrance. Impossible things will start manifesting. You just have to believe that all good is coming your way. So, ये manifesting क्या है? ये I've heard a lot about manifesting from several people. Do you really think it works? Because ये काफी and gratitude, are they both interrelated? What is it? Absolutely. If you're grateful, manifestation begins. Because God knows that you are happy with God, what we have given you. It's like I saw a man
crying for shoes till I saw a man who had no feet. So whatever you have, just do shukrana. And manifestation is when what you think, what you say and do are in harmony. Okay. If I tell you today, this is such a lovely blue and you really want a very beautiful one. And suppose I go out and say, the color doesn't suit him. What am I doing? I'm telling the universe I'm not resonating on truth. When you resonate on truth, everything good happens. Don't be mean, don't be cruel, don't hurt people. I shouldn't say it, but I wish the whole world would become vegetarian. Love animals, be kind. And one of the tips for money is feeding crows. Take a handful of atta and sugar. Every day as you leave the house, in the garden where you are staying, in the building, just leave a pinch for the ants. Feed a black dog milk, feed cows potatoes, feed birds, feed fish. When you give to others, the universe will give back to you. Look after the girl servants in your house, the young nanny girls. Get them little gifts, keep them happy. I've seen when all this is done. But I've heard many people who say that no, manifestation is not working for me. It's all First of all, because you're not positive. I know people who say, I'm the best, I have won, I'm the winner, and they do it for 10 years and it doesn't work. Because first, suppose you're afraid, and whole day you say, I'm strong, it's not going to work. First, accept, resonate, accept to yourself, yes, I am afraid now, and now I'm going to be strong. And with you do it from strength, I've seen it work. Make a vision board. Stick all the things you want on it. Keep it for 41 days, on the wall, passing by, keep looking at it. Your dream house, your dream job, your family, your holiday, whatever you want, everyone should make one. I do seminars on manifestation one day where I make them put up vision boards. And magic will begin when you start manifesting. But I can't be angry and then say, oh, I love the whole world. I love everything around me. But your energy is of negative, so it will be negative. You can't fool the universe. If you say you're going to love, show it, help the poor, donate, be kind, be generous. It's not all about money. Give a shoulder to cry on for somebody. It could be anything. But what you give in manifestation is what you get back. And why is it called like कि present tense में मांगना चाहिए कि मुझे अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ रुपए मेरे पास में है. You have to say in past, present, perfect as if it's already done. हाँ. So I was teaching, my guru had taught me wonderful, manifestation phrases for years and years. So one day when I was teaching in my bungalow to 60 people, one lady got up, and it's the first time in my so many years, I was nearly in tears. She said, Madam, you don't know how to teach affirmations. And that time I was teaching, I have conceived a happy, healthy, normal child. My guru had taught me this. And she said, this is wrong. So I remember sir saying, don't keep your ego too proud. Whatever anyone is saying, listen, think, and then decide. So I asked her what happened, and all my old students were there. They were all shocked. And she told, Madam, this is nonsense what you're teaching. What you have to teach is, I have conceived 5 times. What's the use of saying conceived? You have to say, I've conceived and delivered a happy, healthy, normal child. Now, that hadn't gone into my head ever. So she was absolutely right. From that time, last 15, 18 years, I have changed from only conceiving to, so every spoken word is important. The power of the spoken word. If you say, God is every day saying Tathastu. And if you say, Mera kuch nahi hone wala hai, now I'm doomed, how will I pay the bill? God is only saying Tathastu. So don't whisper one word. Main to khatam ho gaya. God will say, okay, this person wants khatam. True. मैं तो मर गया, अरे मेरी तो ज़बान जल गई. People unknowingly say so many wrong things. I've heard mothers telling their children, बेटा सुन, आज तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, कल जब तुझे बेटा होगा, तू देखना जब वो तंग करेगा तो. She's already made the pathway and put to the universe. Unknowingly she has cursed. So mothers,
all the mothers groups that are there, mompreneurs is a lovely group. I teach them also, please, always, 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 don't curse unknowingly also. True. Think what you say. From times immemorial, if you look at it, men don't curse. It's the Helen of Troy. Women, most of them, they are angry and curse. If it's a Maharishi for 10,000 years, if he's does sadhana, and one Menaka does him, and if he says, that's another thing. But if you look at it, if a woman is shant, kind, loving, a home will never break. Believe me, all the women, cook what the husband likes, keep the home the way he likes. Okay, keep it clean. Light 3 agarbattis 3 times a day. Light 2 diyas. Make it powerful. And all good will come your way. And write 808 on your left wrist. Any mantra where your wife starts worshipping you? Ole Baba. Yes, the mantra would be make a relationship corner of a husband and wife. And you can do this for brother, sister, mother, mother-in-law, to bond with another person. You can do it even if someone has left you for a long time and you want them back. 2 flowers, the man or the woman brings 2 flowers and places it in that vase. Put anything in pairs, 2 agarbattis, 2 diyas, 2 candles, 2 birds, and make a small corner with a marriage picture if you have, or any other married couple statue, and completely look at it. Keep it in the southwest. Keep a nice pink cloth if you can. Love it, cherish it, and make that your relationship corner. And husbands, if you want money, it's the greatest tip in the world. Take 2 flowers to your wife once a week or once in 10 days. And believe me, if you don't come back and write to them that magic has started, believe me, it will. Well, I was kind of joking with my question, but yeah, your answer makes a lot of sense. Respect the woman. Respecting women, I think it's the core essence of our lives in general. And Whether Navratri is just gone. You worship the Mata and then you curse the woman in the house. You curse the servants. You shout at the sweeper, the maid that suddenly by mistake breaks a glass. You fire her. It doesn't work. True. Absolutely true. So, एक जनरल वेलबींग के लिए कोई ऐसा मंत्र है जिसमें कि हम एक पॉजिटिविटी को अपनाते हुए नेगेटिविटी को दूर ही रखें अपनी लाइफ में? Is there any kind of mantra for that? One thing is have a bath every day. And there are 7 things. One day bathe with cinnamon powder in a little bit of water to the first mug. One day with salt. One day with curd. One day with lavanka powder. Okay? One day with milk. Wash your hands before sleeping. Take a bath. Say, this is a mug of water. Take it round your head 3 times. Throw it and then go to sleep if you have not had a bath. And wash your feet if possible. I've seen washing of feet every night. 3 mugs. You don't carry outside negativity into the house. Try and keep chappals out. If you can, place fitkari. Have nice smelling incense. Make your bathroom smell nicely. All this changes the vibration of the home. Wear good colors. The colors that I've given you according to your numbers, wear. If you want to increase love, wear pink. Wear reds. If you want fame, red and black. If you want more work, navy blue and black. If you want stability, your house is breaking. If your husband's left you, a new woman's come into your husband's life. In the south and southwest, use the color yellow. Immediately your house will stabilize. Yellow curtains, yellow napkin. South and southwest, even for money. When I had my bungalow, I had painted the walls yellow of the south. My son's bedroom, south side, I put yellow color, yellow curtains, yellow tablecloth, yellow statues. You can use a cushion. Suppose you have a mother-in-law who says, no, you can't do anything here. Place a yellow cushion. Place a yellow plate. Do something. Bring yellow napkins into the south and southwest, both for relationships and for money. And all good. Put a black dot behind your ear every day. That's super. You might think it's just superstitious, but try it. It works. लेकिन इन सब की घुमा फिरा के बात है कि आपको नहाना रोज पड़ेगा। तो हम में से जो लोग रोज नहीं नहाते हैं वो प्लीज जय राम जी की
एक और चीज़, सिर्फ बदन को नहीं साफ करना है, इसको भी ब्रूम करना है। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, अगर आपने सॉरी नहीं कहा है किसी को तो दिल से सॉरी कीजिए। वो गुस्सा नहीं तो आपके अंदर रहेगा। गॉट इट? अगर गुस्सा अंदर है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। अगर दिल टूटा है तो हार्ट का ट्रबल आ जाएगा। अगर गर्दन का प्रॉब्लम है मतलब आपको पता नहीं किस दिशा में जाने हैं। अगर नीज का प्रॉब्लम है मतलब बहुत भार आ गया है, फेयर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। और अगर बैक का प्रॉब्लम है या तो आपके हस्बैंड किसी को लेके चले गए हैं या मनी, लोअर बैक एंड अपर बैक। तो दिस इज कॉल्ड किनेसियोलॉजी, वेयर बरकत के लिए मेक श्योर दैट ये चीज़ें अगर आपके पास हो रही है थ्रू आउट दोज नेगेटिव थॉट्स। क्या होता है, लोग आपके दिल में नेगेटिव जगह बना देते, रेंट। People have a rent-free place in your heart. Kick them out, all the wrong people from your life, and double the rent. किसी को भी अपने जिंदगी में फ्री मत आने देना जो आपको गाली देता है, जो आपको बोलता है यू आर नॉनसेंसिकल, या कुछ नहीं। और ये लोगों को अपने आप से दूर हटो। अगर वो घर में भी है जहाँ आप रहते, दूसरे रूम में जाओ, उनसे दूर रहिए। अपना मनोबल स्ट्रांग रखिए। Believe that all good is coming your way and say I'm strong, I'm brave, I'm powerful. Keep telling you। क्या होता है, कोई बोलता है मैं तो कभी खराब बोलता नहीं हूँ, पर बैठे बैठे सोचता है मैं तो गया काम से, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, अब बेटी की शादी होगी कि नहीं। मन में भी ये थॉट्स यूनिवर्स पिकअप करता है। पर मेरे दिमाग में एक बात काफ़ी टाइम से घूम रही है, वो ये है कि इंसान की किस्मत में अगर दुख लिखे हैं तो हम ये सारे उपाय करके उनको किस हद तक भगा सकते हैं, जबकि हमें पता है कि किस्मत तो खुद भगवान भी चेंज नहीं कर पाते। जैसा मैंने आपको अर्लियर बताया था कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है और अच्छे कर्म किए, अच्छी सोच, अच्छे विचार, आपने सब कुछ अच्छा किया है, तो वो बम्पी राइड से स्मूदर राइड, और आप हॉस्पिटल इसका डिलीवरी के लिए जाएंगे। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि लोग, भगवान आपका सब भार, एंजल्स, गाइड्स, गुरुज, असेंडेड मास्टर्स, सब कोशिश कर रहे हैं आपका भार कम करने। पर आप नए बुरे कर्म मत कीजिए। जो आप आए हो ये ज़िंदगी में कर्म पूरा करें, बस वो पूरा कीजिए। डोंट बिल्ड। अगर आपने सोचा अच्छा बेटी भाग गई नेबर किचन में, उसको भी फ़ोन करके बोलो, दुनिया में ये आपके साथ होगा, आप नहीं तो आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ। बिकॉज यूनिवर्स गिव्स यू बैक वॉट यू डू टू अदर्स। देर आर नो फ्री डिनर्स। सो बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम आप कर्स करते हो, किसी को पिटते हो, चिल्लाते हो, नेगेटिव थॉट्स, किसी को प्रॉमिस किया और फिर शादी नहीं करते हो, हर्ट करते हो, मत हर्ट करो। और हर्ट किया तो दिल से माफ़ी मांगिए, गलती से भी हो। आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। There's a lovely 4 phrases called Ho'oponopono, and there are 4 words in that. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. You must say it every morning and every night. दिल से you must say it. So say it to the whole universe कि अगर पूरे दिन में मैंने काम कुछ गलत किया है तो I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. आपने बोला है ये यूनिवर्स को। अगर कोई फ्रेंड हो तो थिंक ऑफ देम। अगर आपने किसी से झगड़ा किया है, बनना अनबन हो गई है, तो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू रोज़ कीजिए। एंड वन अदर थिंग, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कोई कर्स है, कोई पनवती है, कोई जादू टोना किया है, कुछ लोग ये बोलते हैं, तो ये आपको चेस्ट से शुरू करना है। इट्स कॉल्ड टैपिंग। सो यू से आई रिलीज, मतलब मैं रिलीज करती हूँ all oaths, vows and curses in this lifetime and in any other lifetime. Either I have given to anyone or anyone has given it to me. Thank you God, it is done, it is done, it is done now. ये बोलना है आपको, छोटी प्रेयर। बोलते बोलते आप कुछ गलत बोल सकते कि मैं तो अभी कभी आम नहीं खाऊंगी, फिर आप आम खाना शुरू करो। ओके। So एवरी डे वंस ए डू कि अगर मैंने गलती से कोई भी ओथ लिया है, वाव लिया है और कर्स लिया है किसी से, या मैंने दिया है, तो आई आस्क फॉर इट टू बी। दिन में एक बार आई डू इट। मैं गाड़ी चलाते वक्त करती हूँ। ओके। सब ट्राई कीजिए।
बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और जो आपके पूर्वज है, ओके, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर अलाइव है तो माँ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फैमिली की सेवा कीजिए। नहीं हुआ तो एटलीस्ट उनको याद कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और वो ज़रूर माफ़ करेंगे। सो बेसिकली हम भले ही इसको न्यूमरोलॉजी का नाम दे दें या किसी और साइंस का नाम दे दें, बट एक्चुअली में ये घुमा फिरा के यही है कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ क्लीन. Yes, it's the occult sign of be pure. हाँ, बी प्योर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड दैट्स हाउ कीप योर रिलेशनशिप्स क्लीन एंड वेरी cordial with everyone, not just your family but your business associates. Absolute. And imagine a white light around you every day. Completely just, and pray to God that, dear Lord, please protect and surround me, my car, my home, your podcast, the house, everything. You can say however many names you want. Say, dear Lord, please protect and surround us with your 3 words: bright white light, shield. And let only those things come to me and to us that are through you, God, and from you. Thank you, God. डिसीजेस के बारे में हमने बात की और बरकत के बारे में भी हमने बात की. क्या कोई नंबर्स भी होते हैं जो इनको दूर रख सकते हैं और बरकत को पास ला सकते हैं? Absolutely. This is the number for diabetes. These are called switch word numbers. You put them under where you sleep, in your purse, put your medicines on it, write it on your water bottles. I will send you all the numbers and let them communicate to you. There are 5,000 numbers. So suppose they want a number for hernia. You tell them to ask you and I will send you and you send it to that. If someone is going through a heart attack or is depressed, what number? Number for cancer, number for pain, number for hurt. There are millions of numbers. This is for number which everybody complains of, is getting good sleep. So keep it not while you are driving, but keep the same way. Drink water, a bottle at night. Keep a bottle under it. Keep it under your pillow, under your mattress. This is the number what everyone loves, money, money, money. Okay, this is the number for money. You can put it under your bed, in your car, wherever you like. And this is the number for back pain. Lots of people suffer from back pain. This is I attract money. And like these, I'm going to send you many, many, many numbers. As they be in touch with you, come to your podcast, they will. And this, if you want new love or to bring back your old love to you, this is the number. If your husband's not loving you enough, keep this, write it on the bottle of water, keep it with your husband and your picture next to it. On both sides, your pictures facing each other and these numbers twice. Print them out in this much. And it works wonders. बट प्लीज नोट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए नहीं है. Absolutely नहीं. Because then you will not keep the wife happy. अगर आपके बाल गिर रहे, तो this is a very good number for hair fall. Amazingly चलता है. So, Write it on your comb. Write is it it on either of the two or both in combined? You can use 10 numbers even. I will send you over 100, 200 numbers. And this is the number for manifestation, for good luck. Okay. Write it on your desk, print it and keep it. Keep it in your wallet. And another important thing, use the color green this year and next year for your wallets and your money. And don't keep, like I've put my purse up here, don't put Lakshmi on the floor where you're walking. And if you have Ganpatis, don't keep them outside your door. One time in the life, Parvati kept Ganesha out. And what was the natija? So don't keep out. I see Ganpatis with cobwebs, no agarbatti, no prayer. Don't do that. They are not showpieces. Okay, but many people also install, several deity statues outside It's up to them, but look after it, pray over it, put agarbatti. Hanumanji they put in south-facing homes, but look after them. The lesser the gods, the better it is. Go to the mandir. Sure, God wants to see your energy and not your gold, silver or statue. Is there any way to keep your house always positive and beaming with the
Light 3 agarbattis, sage, salt in the four corners of your home, blow cinnamon powder, that you said. clap your hands 3 times. Even when you're entering your door, knock 3 times. Today when I entered also, I knocked. Knocking 3 times removes all negativity, doesn't come into your house. Okay. All these are things. Wear silver on your left hand. It's very good. Okay. Women should dress, wear their jewelry. Paramahansa Yogananda wrote in his book that he saw his father coming home and the mother dressed as a bride every day. Today we tell bye, saab aa gaya, chai de do. We don't even make tea for our husbands today. There's no time. So give your family time if you want long-lasting relationships. नाइस। और दिवाली का टाइम है तो ऐसे में कोई खास टिप हमारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए? Yeah, use the right colors. You can wear a green emerald on your left finger. Everyone. Keep lights, yes, for barakat. Keep lights on. Don't call a pandit and hua can I have seen people do like this. One agarbatti and they're talking on the phone. Okay, and the God is there and in Diwali the puja is going on. But his mind, but he's scared that God gussa nahi ho jaye. That's why he's phoning and doing agar. God is not interested in that. After you finish the phone, 1 second, just think of the divine and the countless blessings, and that is the best prayer. Be kind to creatures, kind to animals. And kindness is what the sad world needs. That's an eye-opening. That's really amazing to talk to you. Thank you. This was a bhandar of tips and various other things that I got to know today. On Wear the color red for name, fame, recognition. true. That- And this year, may I say one thing? Maybe you won't like it. This year, the color navy blue is not to be worn. Because, and I'd explain to you, this year it's the color of accident. So be careful. I had a purplish blue car. It looked blue a little bit. So I painted it to green, my Mustang. Don't wear any blues this year. It's the color of accident. Please, I've seen so many accidents happening. So a special request, wear any other color. Till 31st, don't wear blue. wow. That is what my guru had taught me. This is a very important thing. When you're giving money to somebody, fold the note back to you, thank it, imagine it is coming back to you 1,000-fold, and then give it. Okay, that was, and it should be given and taken by a right hand, right? Is what I've heard. Better, but more important thing is attracting it. Towards back. back to okay. So thank you, Ravi ji, for bringing me here for this lovely podcast. And if the audience on YouTube and on Instagram want to ask you, Mr. Ravi Agarwal, please at your podcast, the name is Success Fund Day. Success Fund Day. Please go to Success Fund Day. Whatever question you want to ask me, my name is Zenobia Kudaiji. Please ask him and I will coordinate and send all your queries back to you. God bless you. Stay happy, stay blessed. Use numbers and become millionaires. God bless you. Stay happy, stay healthy. I would also like to wish all the audience on YouTube, on Instagram, from Success Fund Day, a happy Diwali, a prosperous new year. Stay happy and stay blessed. God bless you all. तो ये थी ज़ेनोबिया खुडाई जी, जिनकी अचरज भरी बातों से न सिर्फ मेरी बल्कि हमारी कई व्यूअर्स की भी आंखें खुली होंगी। इनकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि इनका अपनी फील्ड को लेकर फंडा कितना क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप भी अपने एक्सपर्टीज के फंडे को सक्सेस फंडे के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में लिखिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर आपको इनवाइट करना चाहेगी। लेकिन तब तक हम आपके लिए समाज में फैले ऐसे ही हीरो और नगीनों को आपके सामने चुन चुन कर पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।